A very cheerful good morning to all of you. Welcome to the English class. So today we will do the exercise on lesson number 16. The name of this lesson is tenses. So before we start this lesson, you have to know about the tenses. Yes, student, tenses are the forms of verbs which express the time of action, or we can say that tenses are used to denote time and action in a sentence. Okay, so I told you before that the time plus action is equal to tenses. जब भी हमको टाइम के बारे में पता चलता है या एक्शन के बारे में पता चलेगा तो हमको पता चलेगा क्या है ये tenses है. So student, you know very well the tenses are of three kinds: present tense, past tense and future tense. According to a time we differentiate tenses. Okay, present, past and future. Okay, now according to our action, so each tenses has four parts: indefinite, continuous, perfect and perfect continuous tense. Yes, let's start. The present, past and future tenses, and they are the four subcategories of present tense: present indefinite tense, present continuous tense, present perfect tense and present perfect continuous. And the past tense has four subcategories: past indefinite, yeah, we can say simple past, past continuous, past perfect continuous. Now next, future tense. Yes, first has the four categories of future tense. First is here future indefinite tense, or we can say simple future, future continuous, future perfect and future perfect continuous. Okay, now let's start the exercise of this chapter. Yes, exercise number 1. Underline the verbs in the following sentences and state whether they are simple present, simple past or simple future. Okay student, आपके जो भी sentences दिए गए हैं उसके अंदर जो verbs है आपको underline करना है और आपको ये बताना है कि वो simple present है, simple past है या simple future है. So before starting this, you have to know about the structure of simple present, past and future. Yes, the structure of simple present, yes, subject plus V1, verb की first form plus SES plus object. Clear? And the simple past, the structure of simple past is subject plus verb की second form plus object. And the simple future tense, subject plus will oblique shall plus verb की first form plus object. Clear student? Okay, now let's start. The very first sentence is here: the gardener waters the plants every day. So in this sentence, water is here as a verb here in this sentence. Yes, waters, you know very well this is the simple present tense. Why? Because subject is here, the gardener. Okay, the verb is here, verb first plus SES. So here waters is, you have to identify that this is a simple present tense. And the second identification is every day. Gardener waters the plant every day. जो काम जो हम यूजुअली रोज हो रहा है, जो काम रोज होता है, उसी को हमें जो पहचान होती है किसमें होती है? सिंपल प्रेजेंट टेंस. क्लियर? नेक्स्ट सेंटेंस: Jasmine was in the garden when it started to rain. Yes, in the sentence was, underline the verb as a was and started verb की second form. Yes, you know the structure of simple past. Yes, subject plus verb की second form plus object. Okay, so this is a simple past tense. Clear? Number third, I will buy some flowers for my Genie. Yes, yes, here the verb is here. Underline the student, will buy. Okay, yeah, this is a simple future tense. You know the structure of simple future tense: subject plus will oblique shall plus verb की first form plus object. Here you know very well that shall is omitted here in the modern English, so here we use yes, I will buy. Okay, number fourth sentence: the doorbell rang a few minutes ago but nobody opened the door. Yes, you notice the verb की second form. Yes, the rang, opened. Okay, ring has a verb की first form and rang is a verb की second form. Okay, open first form and open is here second form. So this is a simple past tense. Clear? Number fifth, yesterday a storm hit a small town near Bengaluru. Yes student, yesterday आपको आइडेंटिफाई हो रहा है, yesterday जो काम हो गया, जो बीते हुए समय में जो काम हुआ है उसको हम क्या बोल रहे हैं? yesterday. yesterday की बात चल रही है, कल की बात चल रही है. a storm hit, अब hit तो देखो आइडेंटिफाई हो रहा है कि verb है, लेकिन जो hit, जो verb की फर्स्ट फॉर्म भी hit होती है, सेकंड भी और थर्ड भी क्या होती है? hit ही होती है. लेकिन हम आइडेंटिफाई कैसे करें? सेंटेंस को आइडेंटिफाई करने के लिए आपको पता होना चाहिए कि yesterday इधर जो वर्ड यूज क्या है, तो yesterday का मतलब क्या है? पास्ट. तो हियर
Yes, is simple past tense. Okay. Number 6. Today's function will be reported in tomorrow's newspaper. Yes, you know very well will is here in the simple future tense. Yes, you have to identify as a simple future. Number 7. Sam jogs for an hour every morning. Yes, you know very well every morning अब बात हो रही है प्रत्येक मॉर्निंग की बात हो रही है इससे आइडेंटिफिकेशन हो रहा है कि प्रेजेंट टेंस है और सैम जॉग्स तो हम वर्ब देखते हैं तो verbs के साथ एस यूज करते हैं एज अ सिंगुलर सब्जेक्ट इज सिंगुलर हियर एज अ सैम तो verb के साथ हमने यूज किया एस yes so here we use as a jog so see, this is a simple present tense clear next Number 8. Salma chatted with her friends on her mobile for nearly an hour. Okay, so here you notice the verb is here, chatted. Yes, chatted is here, second form of the verb here. So this is a simple past tense. Number 9. The play started an hour ago. So here the second form of start, started. So here notice, yes, it is a simple past tense. Number 10. Karan will finish her story by tomorrow morning. Yes, first identify हो गया कि tomorrow word है in this sentence. Okay, so you have to know that this is a future tense. Yes, and identify the verb will finish. Verb will or shall verb की first form is here in this sentence. So you have to identify that this is a simple future tense. Clear, student? Okay. Now let's start the exercise number 2. Yes, rewrite the following sentences, changing the verb of each so as to show that the action named is going on at the present moment. अब आपके सामने sentences दिए गए हैं अब आपको उसके अंदर जो verbs दे रखी है उसको क्या करना है verb को change करना है किसके according that show that action named is going मतलब जो काम अभी क्या हो रहा है action named is जो काम अभी चल रहा है going चल रहा है on at the present moment तो आपको identify हो गया जो काम हमारे present tense में भी चल रहा है तो उसको हम बोलते हैं present continuous tense. Yes, let's start the structure of the continuous tense. Yes, subject plus is rm plus verb की first form plus ing plus object. Clear? Yes, is used to as a our subject when our subject is as a singular we use is. Clear? And our subject is I so we use am and our subject as a plural so we use are. Clear, student? Now let's start. Number 1, a star shines in the sky. So first of all, you have to identify the sentences. These sentences is in present indefinite tense. A star shines in the sky. Now, change into a present continuous. A star is shining in the sky. So here, you know, student, it already changed the verb. Only changes the verb. Yes, shines change into a present continuous tense. Yes, is shining in the sky. Clear? Okay, next sentence, the cows graze in the field. Okay, subject same as here, the cows. Okay, so change into a present continuous sentence. Okay, so present continuous, you know, is rm, verb की first form plus ing. So the cows as a plural subject is here. Cows are grazing in the field. Clear? Number 3, the tailor sew a shirt. Okay, this sentence is in present indefinite tense. Change into a present continuous tense. The tailor is sewing a shirt. Okay, why is here is because the tailor that the subject is singular. So here we use as a is a subject verb first as a sew plus ing sewing a shirt. Number 4, they play hockey. Yes, student. Yes, you know it well. They play hockey. This is a simple present tense. Yes. Now change into a present continuous. They are playing hockey. You talk nonsense. Okay. Change into a present continuous. You are talking nonsense. Number 6, the children swim in the pond. Yes, student. The children are swimming in the pond. The subject is here plural. Okay. Children. क्या है subject? Plural है इसलिए हमने यूज किया है are. Okay, children are swimming in the pond. Number 7, Hari does his lesson. Yes, change into a continuous. Hari is doing his lesson. Does is here as a verb, so here we use as a do, does. Okay, so Hari is doing his lesson. Number 8, passengers wait for the train. Okay, passengers is here as a plural subject, so here we use are. The passengers are waiting for the train. Now, number 9 sentence, Mohan writes a letter to his mother. Okay, so Mohan is writing a letter to his mother.
Number 10 sentence, the farmer drives his oxen to the field. Yes, drives here simple present tense change into a continuous. The farmer is driving his oxen to the field. Clear, students? So I hope you have to clear this exercise number second. Now let's start the exercise number third. Okay. Yes, rewrite the following sentences, changing the verb of each. हमको क्या करना है, जो sentences दे रखे हैं उसको वापस से rewrite करना है, वापस से लिखना है, और जो verb है उसको change करनी है. देखिए कैसे, as to show that, क्या show करेंगी, the action named has ended just now. जो action named है, action क्या हो रहा है, verb आपको पहचान में identify हो रही है, action क्या हो रहा है, has ended just now. मैंने आपको स्टूडेंट पहले ही बताया था जब हमने perfect tense की बात करी थी, ऐसे हम पास्ट करते हैं, प्रेजेंट परफेक्ट की हम बात करते हैं, तो उसके अंदर आपको पता होता है कि जो भी काम, जो भी एक्शन अभी अभी क्या हुआ है, एंड हुआ है. यस, द प्रेजेंट परफेक्ट टेंस टू एक्सप्रेस एन एक्शन जस्ट है दैट हैज जस्ट गॉट कंप्लीटेड. ओके, जो एक्शन अभी अभी कंप्लीट हुआ उसी को हम क्या बोलते हैं, कौन सा टेंस को आइडेंटिफाई कर रहे हैं, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस. क्लियर. नाउ लेट्स स्टार्ट. नंबर 1 सेंटेंस, आई एम राइटिंग माय copy book. Yes, the verb is here am writing, so this sentence is in present continuous, so change into a present perfect tense. हमको क्या करना है, जो sentence दिए गए हैं उसको present perfect में हमको change करना है. Clear. Now देखते हैं, I have written my book. Yes, you know the structure of the present perfect tense. Yes, student, subject plus has oblique have plus verb की third form v3. Okay, plus object. Okay, so here you have to write, so I, subject is here I. Okay, I. Now write a have written. I से हम use करेंगे have. Clear. I have verb 3. अब writing है तो write क्या है, verb की first form, so you have to write the verb 3, मतलब verb की third form लिखनी है, तो I have written my copy book. Clear. Now next sentence, the leaves are falling to the ground. The leaves, yes, have, the subject is here plural, so here we use as a have as a helping verb, and fall is here as a main verb, so we have to write the third form of the verb fallen. Okay, fallen to the ground. तो हमको क्या करना है, simply कुछ नहीं करना, we have to identify the verb. आपको identify करनी है verb, subject के according आपको has और have use करना है. So as a singular subject we use has, as a plural subject we use have, or we use as a have our subject as I and you we use have. Clear. Number 4 sentence, he is doing his sums. Yes, the change into a perfect tense, he as a subject, as a singular subject, so we use has. He has done, as a verb with third form we use done his sums. Number 5th sentence, we are learning our lessons. Okay, now student, change into verb. Verb is here as a helping or main verb, are learning. Okay, change into as a perfect tense. Yes, we have learned, third form of the learn. Yes, learned our lesson. Clear. Number 6 sentence, I am doing my homework. Yes, verb is here, I am doing. Clear. So change into a perfect tense. Yes, I have done. Done. Yes, doing. His a verb is here, main verb is here, do. Verb first form is here, do. Yes, you have to change into v3. So we have done. Clear. I have done my homework. Number 7 sentence, he is working hard for the examination. Change into a perfect tense. Yes, he has worked hard for the examination. Yes, worked hard. And that form of the verb. Yes, worked. Okay. Number 8 sentence, the sky is growing dark. Yes, change into a perfect tense. Yes, the sky has grown. Third form of the verb has a grown. Okay, grown dark. Number 9 sentence, the pain is growing worse. Clear. The pain has grown. Yes, pain has grown. Verb third verse. Clear. Number 10 sentence, the piano is ringing the bell. Yes, the change into a present perfect. The peon, subject as a singular here is a, so has rung the bell. Rung, yes, ring. Third form of the ring, yes, rung. Okay, the peon has rung the bell. Yes, student, I hope you have to understand the exercise second and third. Why? Because these sentences we have to rewrite these sentences and change into a present perfect tense. Clear. Now let's start the exercise number 4.
Yes, in these sentences the verbs have been left out. आपके इसमें जो verb है क्या दे रखी है, left out छोड़ी गई है. Some of the verbs ought to be in the simple present tense. जो भी कुछ verbs होंगी वो उसमें होंगी simple present tense में, and other in present continuous में, और other जो दूसरी verbs हमको put करनी है कौन सी, present continuous. Yes, rewrite the sentences and putting in the correct form. हमको rewrite करना है sentence और हमको put करनी है correct form. Yes, पहले recall कर लेते हैं हम. Yes, simple present tense का structure, yes, you know very well, as a subject plus verb first plus ses plus object. This is a simple present tense. And simple, yes, you know, as a present continuous tense, the structure of, yes, the subject plus is rm plus verb की first form plus ing plus object. Clear? Now let's start. Number one sentence, we dash to music every day. So student, अब आपको आइडेंटिफाई करना है दोनों सेंटेंस में कि वो प्रेजेंट हम जो यूज करेंगे एज ए प्रेजेंट इंडेफिनिट हम वर्ब यूज करेंगे, स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग यूज करेंगे, प्रेजेंट कंटिन्यूअस के लिए. देखते हैं. वी डैश टू म्यूजिक एवरी डे. यस स्टूडेंट, वी एवरी डे, मैं रोज म्यूजिक सुनता हूँ. लिसन का मतलब क्या होता है, सुनना. वर्ब इज हियर गिवन, वर्ब given here, so listen. Okay, so we listen to music every day. So here we use as only a listen. Why? Because subject is plural here. When the subject is plural we don't use s or es. Clear? सेकेंड सेंटेंस, वी डैश टू म्यूजिक नाउ. अभी बात चल रही कि मैं अभी म्यूजिक सुन रहा हूँ. तो अभी जो काम हो रहा है उसको हम यूज करते हैं एज कौन सा टेंस होता है हमारा, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस. तो हमको प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंसेस का स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग जो वर्ब दे रखी है उसको चेंज करना है. यस, देखिए, वी आर लिसनिंग टू म्यूजिक नाउ. यू नो द स्ट्रक्चर, सब्जेक्ट प्लस इज आर एम प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आई एन जी. क्लियर? अब देखिए, वी आर लिसनिंग, तो वी एज अ प्लूरल सब्जेक्ट हियर, और वी यूज आर. As listen verb की first form plus ing, listening to music now. नंबर सेकंड सेंटेंस, द पियोन डैश द बेल एवरी डे. अब आपको आइडेंटिफाई हो रहा है इससे. देखिए, रोज जो काम हो रहा है एवरी डे, तो जो पियोन है वो क्या करता है, रोज बेल बजाता है. तो दिस इज अ सिंपल प्रेजेंट टेंस. सो हियर वी यूज एज अ रिंग्स. व्हाई वी यूज रिंग्स हियर? बिकॉज द पियोन इज सिंगुलर सब्जेक्ट, और यू नो वेरी वेल वर्ब फर्स्ट प्लस ses, तो रिंग्स इज हियर, सुटेबल वर्ब इज हियर, रिंग्स. क्लियर? नेक्स्ट सेंटेंस, ही डैश द बेल नाउ. तो वो क्या कर रहा है अभी. नाउ, नाउ जो वर्ड है उसे आपको आइडेंटिफाई होना चाहिए, जो काम क्या हो रहा है अभी हो रहा है. तो ही इज रिंगिंग द बेल नाउ. नेक्स्ट सेंटेंस, द बॉयज डैश इन द रिवर एवरी डे. अब एवरी डे क्लियर हो रहा है, आपको आइडेंटिफाई हो रहा है ना अच्छे से क्या कि हमारा जो सेंटेंस है ये क्या है, सिंपल प्रेजेंट टेंस है. क्लियर? द बॉयज स्विम इन द रिवर एवरी डे. अब तो बॉयज क्या है यहाँ पर, ऐसा प्लूरल है सब्जेक्ट, इसलिए हम ओनली हम वर्ब पुट करेंगे, सिर्फ जिसमें हम एस यूज नहीं करते. नेक्स्ट सेंटेंस, दे डैश इन द रिवर नाउ. नाउ का मतलब से वर्ड से आइडेंटिफाई हो रहा है कौन सा टेंस है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस. तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस के अकॉर्डिंग हमको स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग यूज करनी है वर्ब एज अ दे आर स्विमिंग. ओके, अब स्विम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी, तो मेक अ वर्ड स्विमिंग, एंड द वर्ब सब्जेक्ट इज हियर दे, सो हियर वी यूज एज अ आर. तो दे आर स्विमिंग इन द रिवर नाउ. Now, next piece, yes, number fourth, the teacher dash on the blackboard every day. Yes, every day. Identify. This is a simple present tense. So here we write here the given here. The yes, write is here. The teacher writes on the blackboard. Next sentence, he dash on the blackboard now. Yes, he is writing on the blackboard now. Why? Because the sentence is in a present continuous tense. So here we use as a he is writing. Clear? Number fifth, dig. The gardener dash the garden every day. The gardener digs the garden every day. Clear, students? So here we use as because the subject is singular here. Okay. Next, he dash the garden now. अभी बात चल रही है अभी present continuous tense. Yes, he is digging the garden now. Okay, so I hope you have to clear the exercise number 4. Now, let's start the exercise number 5. Pick the right word in the bracket to complete the sentences in the past tense. You know the student, the structure of past tense. Yes, subject plus V second means verb की second form plus object. Clear? Now, number one sentence, the sky dash dark and rain fell heavily. So here student, the correct verb is here, the sky grew dark.
Clear? Number second sentence, he dash a letter to his father last night. Last night से भी identify हो रहा है, कौन सा tense है? Past tense है. So we second हमको use करनी है. Yes, he wrote a letter. Clear? Number third sentence, we dash all hope of finding his lost dog. So lost होगा या was losing होगा, जो हम लोग आशा छोड़ रहे हैं उस dog को find करने में, जो क्या हो गया? His lost dog. उसका जो dog है वो lost हो गया, तो here we use as a second form as lost. Clear? Number four, the boy dash a beautiful kite yesterday for the Eid festival. So अब देखिए, अब yesterday words is here in this sentence. You know that is the past tense. So you have to use as a V second. Yes, the boy made a beautiful kite. क्लियर? नंबर फिफ्थ, आपको क्या करना है स्टूडेंट, आपका जो सेंटेंस है आपको उससे भी आइडेंटिफाई हो जाएगा. ये जो वर्ड्स दे रखे हैं, लास्ट नाइट, यस्टरडे, हमने प्रेजेंट की बात करी थी, नाउ वर्ड्स है, एवरीडे, जिससे भी हमको आइडेंटिफाई होता है कि ये प्रेजेंट में है या पास्ट में. क्लियर? Number fifth sentence, you dash a mistake in solving this problem. Yes, you made a mistake in solving this problem. Clear, student? V second here is used as a correct form. You made a mistake in solving this problem. Okay, now let's start the exercise number 6. Yes, fill in the blanks with either simple future or future continuous form of the verb given in the brackets. अब आपको क्या यूज करना है, सेंटेंस के अकॉर्डिंग हमको सिंपल फ्यूचर और फ्यूचर कंटिन्यूअस फॉर्म यूज करनी है. अब देखिए स्ट्रक्चर हम पहले से रिवाइज करते हैं. यस, इन द सिंपल फ्यूचर टेंस, द स्ट्रक्चर ऑफ सिंपल फ्यूचर टेंस, सब्जेक्ट प्लस will oblique shall plus v1 is verb की first form plus object, and the future continuous tense, subject plus will be, okay, plus verb first plus ing plus object. This is the structure of future continuous tense. Okay, let's start. First, number one, Manoj dash a song now. Okay, so now अब जो हो रहा है, क्या हो रहा है, मनोज अभी गाएगा, गाना गाएगा, तो here we use as a Manoj will sing. अब आप कंफ्यूज मत होना कि अभी जो नाउ वर्ड था हमने अभी, आपने मैम आप बोलेंगे कि मैम अभी आपने बताया था कंटिन्यूअस के जो सेंटेंसेस है उसमें भी नाउ था, अब आप इसमें भी नाउ बता रहे हैं, लेकिन हमको क्या यूज करना है, आपको ऊपर दे रखा है, क्राइटेरिया दे रखा है कि या तो आपको सिंपल फ्यूचर यूज करना है या फ्यूचर कंटिन्यूअस यूज करना है. तो हियर वी यूज एज अ सिंपल फ्यूचर. मनोज विल सिंग अ सॉन्ग, मोहन अभी सॉन्ग गाएगा. क्लियर? Number second, rather dash the rooms when you reach your house. Yes, verb is given here. Sweep. Yes, Radha will be sweeping the rooms when you reach your house. जब तुम अपने हाउस पर पहुंचोगे तो क्या कर रही होगी राधा? Sweeping कर रही होगी. Yes, here we use continuous. Okay. Number third sentence, my father will be joining the office from tomorrow. Yes, join verb is given here. Yet we know the, notice the word tomorrow. Here we use my father will be joining the office from tomorrow. Now, number fourth sentence, we expect it dash tomorrow. I hope it does not spoil the party. Verb is here, yes, rain. We expect it will rain tomorrow. मतलब क्या होगी, हम expect कर रहे हैं कि कल बारिश होगी. Okay. Now, number fifth sentence, the family dash in their new car to Goa. Verb is given, drive. Yes, the family will be driving in their new car to Goa. This is we use as a future continuous tense. Clear? Now, let's start the exercise number 7. Choose the more suitable answer and fill in the blanks. Yes, number 1, the scientist dash how the rats move in the cage. अब आपको क्या करना है, आपके सामने कुछ भी नहीं दे रखा, आपके सामने only 4 as a objective दे रखे हैं, आपके सामने 4 options दे रखे हैं. You have to choose one. Okay, so according to a sentence, the scientist dashed how the rats move. देखिए फर्स्ट सेंटेंस में देखिए rats moved. अब move क्या है, वर्ब की सेकंड फॉर्म, तो हमको पता होना चाहिए हम जो भी वर्ब हम चूज करेंगे वो क्या होना चाहिए, वी सेकंड. द साइंटिस्ट वॉच, देखा, ओके, वॉच किया उसको, हाउ द रैट्स मूव इन द केज. Number second sentence, my sister will dash a cake this Saturday. Okay students, will here is will के साथ हम use करते हैं verb की first form. So here you know you have to choose number D. Yes, my sister will bake a cake this Saturday. Clear? Baking, bake से तो आपको तो past tense भी use कर रहे हैं, इसके अंदर verb as a continuous की भी verb है और simple present tense ऐसे use कर रहे हैं, verbs use कर रहे हैं. तो here the correct verb is here bake, क्योंकि will के साथ क्या होती है verb की first form
हम यूज करते हैं. नंबर थर्ड सेंटेंस, द डॉक्टर डैश ए डैश मी, आई हैव टू कलेक्ट माई मेडिसिन नाउ. तो यस, यू नो, नोटिस आई हैव टू कलेक्ट माई मेडिसिन, परफेक्ट टेंस यूज कर रहे हैं हम. यस हियर, यस द डॉक्टर हैज एग्जामिन्ड मी. ओके, क्लियर. नाउ number four sentence, each of the girls dash her hairs when she goes to. Yes, she goes to identify हो रहा है, goes आपको identify हो रहा है, structure के according क्या है, simple present tense है. Here we have to write the verb of simple present, each of the girls ties her hair. Clear. Now next sentence, Sumit dash football in the house when he accidentally dash his mother favorite vase. अब क्या होता है, सुमित was playing in the, अब क्या कर रहा था, सुमित क्या कर रहा था, वो क्या फुटबॉल खेल रहा था घर के अंदर. क्लियर. जब क्या हुआ, when he accidentally, उसने क्या कर दिया, broke his mother's favorite vase, मतलब उसने जो मदर का जो फेवरेट वास था वो क्या कर दिया, broke, क्या कर दिया, तोड़ दिया. मतलब क्लियर हो गया आपको कि जो पहले हमने कंटिन्यूस यूज किया है पास्ट कंटिन्यूस और सेकंड में हमने यूज किया है पास्ट टेंस. तो आपको क्लियर होना चाहिए कि हमको चूज करना है कि इसके अकॉर्डिंग. अब देखिए, इज प्लेइंग और ब्रोक नहीं आ रहा इसके अंदर, क्यों, एक्सीडेंटली ब्रेक हिज मदर फेवरेट वास, क्योंकि तो इस सेंटेंस के अकॉर्डिंग ये सुटेबल नहीं है. प्लेस और ब्रोक भी नहीं होता है. प्लेस खेलता है, रेगुलर नहीं खेलता, मतलब प्लेस खेलता है हाउस के अंदर. व्हेन ही, जब ही एक्सीडेंटली ब्रोक हिज मदर्स फेवरेट हाउस, तो क्लियर नहीं हो रही हमारी वर्ब. नंबर लास्ट देखते हैं, वाज प्लेइंग और वाज ब्रेकिंग भी क्लियर नहीं हो रहे हमारे. तो आपको सेंटेंस के अकॉर्डिंग क्या करना है, वर्ब को चूज करना है. क्लियर स्टूडेंट.